Types of motion. Circular path, circular path, then it is called a circular motion, and this is a rotatory motion about its axis, and random motion is squared disorder shape. Okay. In daily life, which motion is being used in daily life? Linear Yes, motion. linear motion. Huh? Yes. Good. Your good name? Saira Munir beta you. Abhiha? Nowadays, if you are introducing yourself, so you have to say, myself is Abhiha and myself is like this, okay? So, okay. Moving on. Nuclear power plant. We need. The topic that is was nuclear power plant. And the nuclear power plant basically generates electricity. Here we have the motor, and here we have cells that are producing electricity and the light. But it has been on from since the morning started. Okay. Nuclear power plant. Do you have any idea, beta, where we have nuclear power plant in our country nowadays? Do you have any idea about? Have you Yes, seen but- about nuclear plant, power plant? Nowadays, how we produce our electricity? Come on, beta. Using motors, water turbine, wind power, which is driven by the wind turbine. Okay. So nuclear power plant, I think that is in Chashma Barrage. Yes. That For is- electricity, it is in. Yeah, for electricity. Okay, good. Asfazis and Kainat Finland. One piece up. Like nowadays it is in practice that myself is Malaika. My name is, तो कहते हैं ना बेटा, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये कहें कि myself is Malaika. Okay? जी बेटा. Ahnaf? Ahlam Abdullah. What is the meaning of Ahlam? I don't know. Sorry beta? Okay, that's good. May Allah bless you. So this is the binary clock. We use it to convert the analog signals into digital signals by using this clock. The pink color indicates the on button and black color indicates off, and this screen shows us the time. Okay. I don't have any idea about it, in fact. Yes, basically, I have some idea. I can ask Okay, some questions. So, what is meant by binary? Binary means the zeros and one language. Decoding in? What do you said? What is meant by binary? Zeros and one language. 0 and 1. So, which language is used by computer? Digital. Binary or digital? Yeah, if it is digital, then how many digits we can use in computer language? 2 digits, zeros and one. 0 and 1. Binary language is basically computer language. Very good, beta. Now moving to Walaikum Assalam. Good. बच्चों के साइड पे खड़ी This is the well. The well will supply water to tank. After receiving water, the tank will distribute this water to its vessels. So the plant will receive water, and then it will help in growth. Okay. Do you have any idea about we are using nowadays this type of irrigation? Some areas. In which area? Have you ever seen? No. No, not yet. You need to go to the Google and you must visit all these Search things. it. Okay. And what is the title of your Garden. Garden. No, I think it's botanical garden. So, what is the meaning of botanical garden? Botanical garden. Life. Huh. Life, living organisms
Which kind of living organism do we see in the botanical gardens? Plants. Plants. Plants Fine. are environment. Mostly plants. Okay. Walaikum assalam, beta. Myself, Ashfaqar. I'm Samavia Kamal. I'm Ilaf Abbas. Ilaf Abbasi. Today we are presenting the model about photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants use carbon dioxide and water to make glucose in the presence of light absorbed by chloroplast. Further, my class fellow will explain you about the type that we are. Okay, beta. The reaction that depends on light is called the light-dependent reaction. Chloroplast is the organelle that present in the leaf. That's why the leaf look green. Sorry. What is chloroplast? Can you see the chloroplast present in these leaves? Yes. Eh? How? Function of chloroplast. By the Purpose. Yeah. microscope. Okay. These reactions occur in the thalakite membrane where photosynthetic pigments are arranged into clusters called photosystem. There are two types of photosystem, photosystem 1 or photosystem 2. The process of light-dependent reaction starts from photosystem 2 because the photosystem 2 was first discovered. बहुत अच्छा जाती है. No sir, याद नहीं. ये आता है. Very good, beta. Okay. Walaikum assalam, beta. Myself, Hamna. Okay. Sunlight maximum because if the sunlight is given in more quantity then it's harmful for the plant. So the wavelength that comes towards the plants are of 680 nanometers. 680 nanometers. 680 nanometers. The ray that comes. Okay. Okay. So, do you have any idea that sunlight travels to this earth where we are living? So, how long it takes Yeah. to reach? One sun ray, how long it takes to come Have you any idea about it? reach to the earth? You need to go through the Google, okay? सारी गेम्स में खेला करूँ ये भी It चीज़ें should किया be in करूँ। your syllabus, I think. It's हाँ, ये almost होना 7 चाहिए। minutes. नहीं है? चलो अब आप ये करेंगे ठीक है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Myself, Hamna Rashid. हम राशिद Myself, Malaika Fatih. Bye bye. वाइबा Bye bye. उमाइमा जवाद. Okay. So now we are oh okay we are visiting this model or this one. Actually start from here. This model is about ecosystem. So Ecosystem. Yes, ecosystem. Eco. Yes, ecosystem is a group of living organisms living in a particular area. The living organism interact with other living organism and also they interact with the non-living things. If we talk about this ecosystem, it is a natural ecosystem and it is forest. In this forest, the fox is interacting with goat is interacting with deer, and also these all living things are interacting with non-living things like air, water, sun, etc. Now, if we talk about this part is food chain, and food chain is also very important for ecosystem because the food chain is a sequence of consumers who eat whom. Just like this hawk is eating snake, and then the snake is eating mice, and the mice is eating grasshopper, and this is a decomposer. Decomposer are also important because they provide back the raw nutrients and the raw material back to the environment and nature. If there is no decomposer, so then what would be happen in this world? Then there will be no raw material back to the soil, and then there would be no plants available. Even then there would be no life. Yeah. Okay. Moving very, I mean, DNA. Now we are talking about DNA oxygenated and deoxygenated. The DNA is a What stands for DNA? DNA represent deoxyribonucleic acid. It is a hereditary material which is very important for the living organism. Actually, the DNA is a thing on which gene is present. The gene is present, then the gene is present in the parents, and then the parents. Then the gene is transferred from the parents to the offspring, and the brown beads show that it is made up of sugar and phosphate. Adenine and thymine. Adenine is always attached with the thymine with the hydrogen double bonding, and it is cytosine and adenine, thymine, cytosine and guanine. Cytosine is always attached with guanine because there is a triple hydrogen bonding, and this is all about it. Okay. How we take and how we come to know that if we are going to check the DNA,
which part of the body shows the ghee and the exactly? Do you have any idea about it? Which No, in no, the no. cell, which part? मैंने तो सुना है कि जो Sir, hair in होता है- any cell of the body. In every cell of the body. Yes, every cell of the body. Every cell of the body. This nucleus is present in every cell of the body. But hair strand is easily to take. It is easy to take the hair strand from the body rather than taking a cell. That's most of the time I have heard from and also read different articles that DNA is taken from hair. It's which most is very easily yeah, available. most easily. that's. That is. Well done, beta. May Allah bless you. May Allah progress you. And also, अब मेरे पीछे मुड़ जाओ. whoever you are going to participate in any system and any like part of life, you are going to choose any profession. So your sincerity level and your niyat उसको कहते हैं, that is Which thing, sir? desire जो होती है ना, that should be really very important for every race of life. May Allah bless you all and have a good day and have a good educational career. Okay, may Allah bless you. कल किसने बनाया था वो? इन्होंने बनाया था? जी सर. वो जो कल पैसे लेकर गए उसने तो दिए। वो इन्हीं का था आई थिंक. सैंडविच. आप लोगों ने जीता है? ये तो वो तो नहीं। नेक्स्ट टाइम बेटा, ठीक है? सर ये हार्ट. अच्छा मुझे अभी भी लगता नहीं है कि इन्होंने ये लोग फंसे. ये डीएनए का कर दिया और इसका रहता है। ओके जी माइमा बेटा आप बताइए। So this is a heart and it is a organ in a human's body. So actually the heart is an organ that provides blood to all body of body. So we have this is happens to have blood in our body that is known as the oxygenated and deoxygenated blood. So the oxygenated blood is the blood that is limited in our body, and the deoxygenated blood is the blood that is the dirty blood, or you can say that blood have a lot of nutrients that should be cared. So that Impure, that is not dirty. In fact, impurity. Oxygenated. Oxygenated and deoxygenated. Yeah. Oh, impurities Oxygenated and are- yes, deoxygenated. yeah. Yes. So there are some impurities in the blood. So the deoxygenated blood is that is brought back to the heart by the superior vena cava of our body. Then it is cleaned in the lungs. It is brought to the lungs to get cleaned, and then it turns into oxygenated blood, which is appropriate and which is suitable for our body. So the oxygenated blood is it returns to the left atrium of our body, and then when the atrium is contracted, it comes into the left ventricle, and from the ventricle it goes to the biggest artery of our body, which is of our heart, which is known as aorta, and then it is transported over every body part. Which organ oxygenate the blood? The lungs oxygenate Lungs. the blood. And what is lungs is the factory of oxygenating the blood? Yes. blood. What is the purpose of oxygenated blood in the body? What does it do in the body? The oxygenated blood does not have any impurities, so the oxygenated blood is actually suitable for our body. So What is the exact function? What does it do in our body? Like you have told us that heart and lungs. Yes, oxygen. And then what is the purpose of oxygen in our body? Because the blood carries oxygen and it takes oxygen to all body cells. Then what? it is used for breathing. Glucose and it provides energy. Yeah. Yes, Yes. it provides energy. It breaks down the sugar molecule to glucose and it gives us energy. This is the main thing. Yeah, yes. So this doctors, mashallah. Walaikum assalam. Sir, myself, Aisha. Aisha. Myself, Fatima. Noor Fatima. I am Ilma. And I am Malaika Manzoor. Sir, I'm here to present the physics module hydraulic press and Noor represents performing the working of the hydraulic press. Basically, the hydraulic press is invented in 1975 by Joseph Brahma. 1975. Yes. It's too early. Not like, too late. It's not too late. Yes. You know? Before 1975, what people were doing with hydraulic system? ये तो बेटा पहले का हो जाना चाहिए। ये तो hydraulic press जो है, आप चेक कीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि 1975। They were mostly using rocks for crushing and grinding. No, Malaika बेटा, 1975 it
it may be 1675 We can check it right now. 1875 maybe. Search from the Google hydraulic when हाँ, hydraulic press. hydraulic जो है ना वो बेसिकली तो जाहिर है बहुत पहले का हुआ हुआ है ना. सर इट डिपेंड मे बी के वो उसका यूज कब डिस्कवर किया हो. यूज भी बहुत पहले का उसको डिस्कवर भी किया. चेक कर लो. Actually, sir, the concept of hydraulic things were invented very earlier, but the Yes. hydraulic press main application was invented. Hydraulic press. We can check it right here. Okay. I cannot struggle with you people because you definitely know better than me because you are studying nowadays. I have studied in my early age. लेकिन मुझे लगता है ठीक है इसको दोबारा गो थ्रू करें. Okay. अभी ठीक है. ओके. फिर क्या हुआ? Correction करना. पास्कल लॉ. It is 1795. Yes. 1795. मुझे पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने. चल, कोई सर बहुत तेज हैं. You should know. बात- ये मैं बता दूं बेटा. Sir, can अच्छा फिर क्या हुआ? Sir, Pascal has said that the pressure I can check my data. What Pascal states? when the pressure is It's okay. It happens. No problem. contained in the system, the pressure of the system remain constant. Like this, the new representing this model, and hydraulic press is use the pressure to crush the things. Here it is crushed and it changes shape. So hydraulic press has many application and uses. For example, it is used for metal casting, forming, and forging, and it is also used in industrial processes. Thank you. Okay. Common application. Common like कॉमन लाइफ यूज की. हाँ बिल्कुल. ये बताइए. very common For application. example, sir, it is used for metal casting, so it can be converted to different shapes. Have you ever seen the car servicing? Car services and also maybe The area where car servicing and is also done. excavators, lifters, Yes. They and have graders hydraulic. and different earth moving equipments. ये mostly जो है ना earth moving equipments. Mostly in car and aeroplane manufacturing industry. Yeah. Even hydraulic brakes are used as well in big vehicles. Hydraulic brakes are used. Pascal says कि when you exert pressure any या area चाहे वो फ्लूइड में हो या किसी भी जगह पे हो ठीक है तो वो क्या करता है वो ऑल डायरेक्शंस में जी सर वो equally इक्वली जब जाता है. फ्लूइड का प्रेशर Except होता है वो इक्वल होता है. अपवर्ड नहीं आता क्योंकि वो जाहिर है उसको press कर रहा है. ग्रेविटी पुल होता है. जी. Yes. And this is the Newton cradle. It New- was Newton first, cradle. It was first discovered in 1976 by an English actor Simon Cradler, Oh. and the name is given. 1976. Yeah, you can even check. And the name. it was Newton died invented- in. Huh? When did Newton die? न्यूटन क्रेडल उसने 1976 में ये अगर No, इजाद it was not invented by Newton. It was invented by Simon Preble. साइमन And Right. Preble. Preble. And the name is given Newton cradle in the honor of Isaac Newton, Law Oh. Third Newton's law Okay, and okay. energy conservation Okay, of momentum. okay, So it dedicates to the name of Isaac Newton, but it's Newton didn't invent it. Okay. And working will perform a river, and when we pull a bob at the front side and when we stop this, the last movement will preserve energy conservation and it will lift upward. This shows the movement of conservation of energy from all the pebbles, only lifting by one pebble. Newton's third law and Newton's second law also manages the same application, and the main application are it is used as a toy and the desktop, and the main is the energy conservation of applications. Thank you. गुड Tell me one game गेम. we play and we use this law of conservation of energy. We play with Marbles at our Okay. childhood. Okay. Any game else than marble? Which you people play? In fact, they don't play any game. You don't play Yes, any. we are, you know, They just make us play. All the They just time. make, We just they just study make their They- teachers- they play their with our teachers play. emotions only. They just make their teachers play. They don't play in fact. So we just study. But Ah. We are very organized people. We are very organized people. Yeah. And you know, we are modern students, so we just use the mobile So phone. that's why Oh. I'm asking about modern games. You people are telling me the games of Sir's childhood. Actually, we are the book readers. You can ask us about different books. different books. What about carom board? Yeah. Yes. What about snooker? Snooker and even These are the Yeah, real applications snooker. of law of Snooker and conservation of carom energy. Yes. yeah, even the golf can be also included. Golf. Not हाँ वो भी तो exactly. न्यूटन
सर बेसिकली इसमें ये कि एक बॉडी एनर्जी प्रिजर्व करके बॉडी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है, तो वो कैरम बोर्ड में होता है जब हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं वो हमारी एनर्जी प्रिजर्व करती है स्ट्राइकर और दूसरे वाले उसको हिट करती है। इस तरह से लेकिन स्नूकर golf में में बेटा आप डायरेक्ट हिट करते हैं ना, जी तो वो किसी और वो बॉल किसी और चीज को तो हिट नहीं हाँ करती। जी, वैसे तो हर बॉडी दूसरी बॉडी में एनर्जी हाँ, वो मतलब तो टच होती है। करके भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जैसे आपने इस बॉब को किया और वो उसने उसको ट्रांसफर किया, तो ये हम स्नूकर और कैरम में कॉमनली इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो यू वेलकम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। My name is Ariba. आप उधर से इधर आ गए। He is performing too. अच्छा यस अरीवा बेटा। Today our topic is logic gates. Today our topic is logic gates, and logic gates are basically the fundamental elements of digital circuits. And digital circuits are the building blocks of digital devices, for example, mobile phone and computers, and all the electronic devices are use logic gates. We have three basic logic gates that are AND, OR, and NOT. But we have choose the AND gate because it was the most available. Okay. So in a AND logic gate, when the one output is on and the other is off, then the output is also off. But if the both inputs are 1 or on, we can say, then the output will only be on. For example, if I perform this, you see that if I press the one button, this light will not lit up. If I press this button, it will not also lit up. But if I press these both buttons, then this light will lit up. So similarly, in email applications, you can say that it is used in email applications. For example, to log in the email account, we ask for the both username and password. If we enter both correct, then we will be allowed to perform or send or receive emails. You are from computer? Yes. Computer science? Computer science, 10th class. You have told us that these logic gates are used in all the devices, electronical devices. Do you think that is there any other application of these logic concept, not exactly the logic gate, but the concept of this logic that one true, one false, both true, both false, other than the electronic devices? हैव यू एवर स्टडीड, आपने कभी पढ़ा कि ये जो लॉजिक गेट्स हम पढ़ते हैं कि एक्स वाई दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, लाइक ज़ीरो को हम फॉल्स कहते हैं ना, वन को ट्रू कहते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा भी कोई एप्लीकेशन है आपके ख्याल में? Maybe, but in Yes. my knowledge, मैं असल में आपको ये बताना चाह रही हूँ बेटा कि ये डिवाइसेस में तो यूज़ होती हैं, क्योंकि ये 0 1 वही है जो हम कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं और ये कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं। और आपको पता है जो डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो आर्मी होते हैं, उन लोगों को स्पेशली ये लॉजिक का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वो लोग जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और वो जिस पैटर्न पे चलते हैं, तो ये सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं। मतलब इसका एक एप्लीकेशन तो आप समझ लें कि फिजिकल है, कि जैसे आप इसको डिवाइसेस के थ्रू करें, और एक एप्लीकेशन इसका मेंटल भी है। इवन कि हमारी जो यूनिवर्स की जो लॉजिक है ना, वो भी इसी के ऊपर बेस करती है। तो ये जो पुलिस मैन होते हैं, किस तरह से एक एक चीज़ को चेक करते हुए एक चीज़ लेते हैं, एक चीज़ को छोड़ते हैं, करते करते वो अपने ट्रैक पे पहुंच जाते हैं अपने इन पे, तो उन लोगों को स्पेशली ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। They are not going to join any investigation and investigating. सर दे शुड नो एटलीस्ट कि सर हमारे जो सर देखिए they must know. I'm just सर kidding. एंड गेट I'm और just kidding, नैंड ma'am. जी नॉर गेट हैं सर, ये What you want to be? सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं Air Force pilot. जी सर, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक लगता है ना। I want to go in the administration CSS. Oh, that's good. सर बिल्कुल नहीं लगता कि इसका रियल लाइफ में भी कोई यूज़ होगा CSS officer. जी, तो सर उनको तो पता होना चाहिए, CSS officer को बेटा पता होना चाहिए जी। और पायलट को भी पता होना बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए। Okay जी। Moving next. वालेकुम अस्सलाम। My name is Iman Azim. And my name is Sabira Khalid. Today, on the presentation, we are going to present this model is the pollution. Pollution is a thing that pollutes the environment and has a bad effect on human beings and on the atmosphere and on the living organism also. There are different types of the pollution: land pollution, water pollution, and the air pollution. Air pollution, yeah. And the industries are the main cause of the air pollution that are causing the pollution on the very large scale, and it has the healthy bad effects on the human beings and on the atmosphere also. Marine life is also disturbed due to the air water pollutions, and land pollution is caused by the human beings that throw the garbages and waste materials, and the incomplete combustion of the motor vehicles produce carbon monoxide, which is very harmful for the human beings. So it may cause diseases, very harmful diseases like asthma and other lung diseases. Lung cancer, etc. Yes.
So to solve all this pollution problem, we should plant more trees, as the plants are the main source of the oxygen for the human being, as they clean the environment. And things like as the purifier, and so we should trees Grow more and more plants to clean the environment. Okay, so one pollution you people are not mentioning, which is noise pollution. Noise pollution, exactly. Due to the The effect of noise pollution on human. loudness, which also has a very bad effect on the patients. because human ears has What is frequency. ozone? Ozone is Ozone layer. it is a ozone layer that filter out the harmful ultraviolet rays radiations from the sun. That coming from the sun. Can we have any like distance between where we are standing now and ozone? How far ozone How is far from the ozone Earth? is from this earth? There is a distance now. Yeah. कितना है? Ozone layer and the Ozone distance layer of में और Earth. जो हम अर्थ पे खड़े हैं अभी, तो हमारा उसके साथ कितना डिस्टेंस है? ये पता है आपको? Correct. ओजोन का और इसका एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, विजिबल तो नहीं है, तो कितना डिस्टेंस है उसका अर्थ से? Of the atmosphere, ozone is present, which will tell the layer. Yes. And what the Above difference between 80 kilometers. कितने किलोमीटर? Above the earth's surface. 75 to 80 80 किलोमीटर. जी हाँ. Above the earth's surface. छोटी क्लासेस में आप 75 पढ़ाते हैं, बड़े हो 80 हो जाती Pollution को है, कम करने लेवल का- बढ़ जाता है ना हमारा इसमें। अमन बेटा, आप तो मैं मास्टर तक जाते ही 100 हो जाएगी. These are the best how source many trees you planted in last 6 months? चले. I didn't remember. So much या no? Zero? Didn't remember means कि So too many. So much. Too many. That's very. तो एक घर में अभी आपके पापा से पूछूंगा, आपके भी पापा से पूछूंगा कि कितना इन्होंने प्लांटेशन किए घर में. आपके घर में है वो टॉप रूफ किचन गार्डन, वो ये वो सारी चीज़ें हैं आपके घर में? और उनको कितना टाइम देते हो बेटा? सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बिल्कुल. कभी टाइम दे देते हैं सर, पानी शानी हाँ, उनको ज़रूर देखा करें और उनको पानी दिया करें और उनको वहाँ पर टाइम स्पेंड किया करें. कहते हैं कि अगर आप ग्रीन किसी भी कोई भी है ना उसको देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपकी आई साइट भी बढ़ती है, मेंटली तौर पे भी बंदा ठीक होता है, और उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है. ठीक है, और फिर इनको जो टाइम चाहिए होता है वो भी आप देते हैं. ठीक है, या अल्लाह ब्लेस यू. जी बेटा. वालेकुम सलाम. फातिमा अब्बासी. जी बेटा. So our डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. model is about the distillation of water. Distillation is a process in which we provide heat to the hard water, and then it converts into water vapor. After vaporization, it gives us a purified and iron-free water, and that's called the softened water. We have impure water, and we are going to heat up, and the vapors of the water H2O will move through this pipe and will distill through and will container, and we will having cold water that will hold our vapors form of water. So we will having our water. What is the pH value? What is the pH value present in drinking water? What we drink? 7. Good. आपने कहाँ से देखा? नेस्ले की बोतल के ऊपर? What is phosphate in water? Phosphate का क्या proportion होना चाहिए? और मैग्नीशियम क्या होना चाहिए? और दूसरा तीसरा 1 ग्लास ऑफ वाटर में आपको पता है इस बात का जो हम पीते हैं उसमें कितने मिनरल्स होने चाहिए? मिनरल्स की अमाउंट लेस होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे किडनी में ना स्टोन्स. आयोनाइज्ड वाटर आपने कहा ना, आयोनाइज्ड, क्या आयोनाइज्ड वाटर मेरे लिए सेहत के लिए ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आयोनाइज्ड. देखिए ना आप, उसमें सोडियम क्लोराइड भी नहीं है. इतना तो नहीं. बच्चे अगर जो वाटर में चीज़ें प्रेजेंट है, अगर वो बिल्कुल ही ना हो तो क्या ये हमारे लिए है? क्या हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं है, या हमारे लिए जो लिमिटेड अमाउंट तो है ना उनकी, लिमिटेड अमाउंट जो रिक्वायर्ड है होनी हमारी चाहिए, बॉडी जो हमारी बॉडी को बेटा, जो हमारी बॉडी को जितने चाहिए होती हैं ये मिनरल्स जितने चाहिए होते हैं वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में ज़रूर मौजूद होने चाहिए. इवन अ ग्लास ऑफ वाटर जो हम पीते हैं उसके अंदर कितनी पीएच होनी चाहिए, कितनी फास्फेट होनी चाहिए, कितने क्लोराइड्स होने चाहिए, कितने मैग्नीशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं. ठीक है, इसको भी स्टडी कीजिएगा कि ग्लास ऑफ वाटर में, ग्लास ऑफ वाटर कितना कितने ml होता है? हैं? कितने ml होता है? 300 ml हो सकता है, 300. नॉर्मली 250 ml होता है बेटा. ठीक है,
जो हम एक नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर है ना वो 250 ml होता है, 300 ml तो ज़ाहिर है वो कंटेनर में ज़्यादा बड़ा करते हैं तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। इसका भी देखिएगा आप, ये देखिए कि रोज़ाना आप कितने मतलब एक गिलास ऑफ वाटर में ये जो मैंने तस्करा किया इनका ये कितने होते हैं, और ये गूगल इसी काम के लिए इसमें भी हमें ज़रूरत है, हमें पानी की अशद ज़रूरत है हमारे खाने में, क्योंकि जो डाउन द अर्थ है पानी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, पता है ना। लैक ऑफ रेनफॉल की नॉर्मली हम लोग पहले तो वो बोर करके तो जी 100 या 150 वो फीट भी पे हम ले यूजफुल लेते है थे, अब 200 प्लस तक भी जाना 300 से भी मैं आगे उससे भी ज़्यादा निकल गया है। इवन वो मशीन्स भी इलेक्ट्रिकल आ गई हैं जो और उसकी ये बेसिक Depth ज़्यादा वजह है वो ज़ाहिर है, एक तो आप पानी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल इस तरह से भी करें, उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करें और बिल्कुल कंजर्वेटिव मोड में जाना चाहिए हमें, और सेकेंडली ये है कि हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और थर्डली बेटा आप लोगों को ये साइंटिस्ट आपने बनना है, जो हमारा रॉ वाटर होता है उसको आप उसमें दोबारा रीयूज़ में लेकर आने के लिए रिसाइकलिंग के लिए, जी हाँ वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, ठीक है। मैं लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थक गए हैं। And this is the structure of molecules. We have so much structures here which are, these are bonding between the molecules. In the carbon dioxide there is a covalent bonding, and in the boron carbon nitrate there is also covalent bonding. NH3 में हमारे पास covalent bonding, H2O में हमारे पास hydrogen bonding होती है. Basically the covalent bonding is a mutual sharing of electrons. When these two molecules like share the electrons and the mutual bonding is CH4 दिस इज नॉट माय कप केमिस्ट्री वाला कौन है सर ये ये बच्चे, कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ मीथेन फ्रॉम डेली लाइफ? हाउ वी गेट मीथेन, यस फ्रॉम डेली मीथेन लाइफ? एंड अमोनिया आल्सो NH3 NH3 sir. डेली लाइफ में कोई एग्जांपल है बेटा इसके? गैस है हमारे जी गैस है। कहाँ यूज़ होती है डेली लाइफ में, वो ये पूछ रही है। हर जगह पे इस्तेमाल होती है गैस। एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, ये हमारे पास आती कहाँ से है? डेली लाइफ में से आप क्या एग्जांपल बता सकते हैं इसकी? सोर्स क्या है? कुकिंग में हमारे पास गैस जो यूज़ होती है, हमारे पास सिलेंडर वगैरह के लिए गैस जो यूज़ होती है, इसमें हमारे पास मीथेन। एनिमल डंग की बात करेंगे इसमें हम? जी एनिमल डंग से भी प्रोड्यूस होती है CH4? यस। यस वो क्या उसको बोलते हैं? एग्जैक्टली। ओके, बाकी और एग्जांपल? क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स बच्चे। हाँ बता दो बेटा। डेली लाइफ में बेटा जिस तरह से मैंने पूछा CH4 या दूसरी अमोनिया NH3, इसका डेली लाइफ में यूज़ ये पूछ रहे हैं ना कि क्या क्या है, यूजेज क्या है इसकी। टीचर जिस तरह से ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ठीक है। थोड़ा इनको हेल्प करते हैं, फ्यूल को रिकॉल करें जरा, आइडिया हो जाएगा। It's from your book. It's from your topic. Recall your previous lecture. Hurry up. टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। हाँ जी, Yes. मीथेन गैस हमारे पास कोल में, Exactly. हमारे पास पेट्रोल में यूज़ होती है, सारी गैसेस हमारे पास यूज़ होती है। You must familiar from the source of the methane as well. हाँ जी बेटा आप बताइए। NaCl stands for सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। हाँ This is the sodium, this is the chlorine ions. This is surrounded by any one element is surrounded by 4 chlorine ions, and this is the anic bond. This is the anic bond. अब डेली लाइफ में तो सोडियम क्लोराइड तो बहुत, लेकिन मैं नहीं ये इस्तेमाल- कितना आसान सवाल मैं है। तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता मैडम। अच्छा सोडियम टूथपेस्ट में क्लोराइड तो हो गई। टूथपेस्ट भी है। अच्छा बेटा सोडियम क्लोराइड आपकी लाइफ मतलब आप अगर सोडियम क्लोराइड नहीं लेते अपनी डाइट में तो क्या बॉडी पे इफेक्ट आता है उसका, और अगर आप मतलब नहीं लेते तो, और टू व्हाट एक्सटेंट ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इफेक्ट आ जाते हैं अगर ना लिया जाए?
ये पढ़ा होगा ना आपने? होता मैंने क्या है? पढ़ा। In this year हमारे पास सॉल्ट होता जी बेटा। है, नमक होता है हमारे जी। पास, नमक इज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नमक हमारे पास हर चीज़ में। बच्चे एक्सेस का क्या इफेक्ट होगा और अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या इफेक्ट होगा? डेफिशिएंसी अगर होती है आपकी सोडियम क्लोराइड की तो क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी पे? अच्छा बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़े ना, सुने बेटा, आप लोग ना माशाल्लाह बहुत लाइकली बच्चे हैं और बड़े काम करने वाले बच्चे हैं। जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेली जो हमारा यूज़ है ना, जो हमारी लाइफ में डेली यूज़ है उसका, और उसके इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट, वो क्या पड़ता है, सबसे पहले तो ये है जानना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बहुत बड़ी बड़ी उसमें जाते हैं, उसकी जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस हैं, ये अलग बात है, ठीक है। आप बता सकते हैं मतलब आपका इंस्टीट्यूट लगा, आपका कौन सा टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स। बच्चे थायराइड क्या है? डिजीज है थायराइड, वो किसकी वजह से होती है, क्या रीज़न है? मैम सॉल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से। दैट इज आंसर, ओके। अब बीपी के पेशेंट को सबसे पहले किस चीज़ से रोका जाता है? बीपी पेशेंट को क्या अवॉइड पेशेंट्स हैं, ब्लड हाँ, बताओ, बताओ, प्रेशर देखो, के मैंने तो उन डॉक्टर सबसे पहले उनको किस चीज़ से अवॉइड करने का सबसे सॉल्ट से पहले? अवॉइड करनी क्योंकि उसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो हाई हाई कंसंट्रेशन क्यों होगी होता है, तो मतलब क्यों सोडियम लेने से, मैम ये भी बताइए कि क्यों होता है, हाई क्या रीज़न है उसका? क्या रीज़न है उसकी? कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसमें। ब्लड में सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है। स्टोन्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सोडियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस, अगर कोई भी आयंस आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो वो आपकी किडनीज में स्टोन्स जी। क्रिएट करते हैं, जो कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। और बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है Yes. एफिशिएंटली, इस वजह से शायद मुझे इस पे कोई रिसर्च करो ना बेटा, ताकि लिमिटेड मैं- अमाउंट ही मुझे अब्जॉर्ब relief मिल होती है, सके। अदरवाइज जो एक्सेस अमाउंट है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है। उसमें जहाँ कहीं ये सोडियम या आयंस की बात है, वो कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से भी तो जी वो भी होती है। थायराइड ऑस्टियोपोरोसिस ये साइड डिजीज इसी वजह से होती है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा कंपोजिशन, एक जगह पर डिकम्पोजिशन होती है ना, तो उसकी वजह से ये फिर जॉइंट्स में ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्यूरिफिकेशन किडनी में हो रही होती है, इसलिए वो सारे स्टोन ज़्यादा स्टोन। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड विच यस जी, आपने जी बेटा, ये तो बहुत प्यारे हैं। रूज फातिमा। Allotropes of carbon and allotropes occur in different states but have same physical state. These are the different types of carbon और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयर में होती है और वो कोई भी म्यूचुअल शेयर बिटवीन 2 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स नहीं होती है। और ये जो ये नैनो ट्यूब है, ये नैनो ट्यूब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की थर्ड टाइप है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में 3 टाइप्स है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड नैनो। ठीक है जी, तो पूछना चाहिए आप इसमें से? बस ये बता दें कि कोई कार्बन का सोर्स है पाकिस्तान में आपके ख्याल में, या हमें इंपोर्ट करना पड़ता है? कि नॉन केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछना है। बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन क्या है बच्चे? कहाँ से Call your निकलता topic है? first. प्लांट्स पे उगता है, ज़मीन से निकलता है, कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बनाते हैं, हमें देते हैं नहीं, plants। कार्बन। कार्बन आई एम टॉकिंग कार्बन का सोर्स क्या वो है? गैस की बात नहीं नेचुरल है या मैन मेड है, ये बताएं। कार्बन जो है बेटा वो कहाँ से Natural है derive या man हम made? कहाँ से लेते हैं? Natural Natural है। है। कहाँ से लेते हैं बेटा? सोर्स क्या है बच्चे? सोर्स क्या है उसकी? फॉसिल फ्यूल की आपको टाइप्स पढ़ाई गई है, उसके इसके अलावा रिकॉल करें। कोल माइंस नहीं होती? कोल माइंस है ना बेटा, जो माइंस होती है ना वहाँ से जी। वो निकाला जाता है ना, वहाँ से मिलता है। और पाकिस्तान बहुत रिच है बहुत रिच है। और ये मेरे ख्याल में उधर चागरी भी है जी। सर नहीं, इधर डंडोत साइड पे, चौसदन शाह और इस साइड पर, ये जो सारा पठवार का इलाका है, बलूचिस्तान ये में भी बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में तो जी, बहुत चाकरी में भी है। बलूचिस्तान में तो खैर यूरेनियम और ये चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान जो है इवन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट जो कोल है, लेकिन डायमंड नहीं है यहाँ पर, बट कोल बहुत अच्छा है। ठीक है, कोल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ या कोल एनर्जी का जो है ना, वो उसको कोल को यूज़ करके हम एनर्जी। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। So here is the model of computer network, star network topology, and here is there are 4 computers and there is 1 router, and इससे ना हम लोग जो computers होते हैं ना उनको हम ना network provide करते हैं। हमारे पास एक router होता है जिससे हम लोग services provide करते हैं, network provide करते हैं। और और इसका हम लोग किया कि अगर इसका
भी जगह या कोई भी नेटवर्क टूट जाए तो हमारा जो वर्क है वो डन होता है। सिर्फ जैसे अगर इसका टूट जाए तो हम लोग और नेटवर्क चलता है, और मतलब अगर हम लोग राउटर जो है वो ख़राब हो जाए तो हमारे सारे नेटवर्क ख़राब हो जाते हैं। और ये हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो होम्स में यूज़ करते हैं, जैसे वाईफाई जैसे होता है ऑफिस में, स्कूल में, कंप्यूटर लैब में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा मॉडल उन्होंने खुद ही सब कुछ बता दिया। तो बिल्कुल ये है ही इतना कुछ तो तो जो सवाल मेरे माइंड में थे वो जवाब उन्होंने दे दिया आपने, यानी कि अगर एक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो बाकी काम और करेंगे या नहीं यूजेज भी करेंगे। बता दिया, और यूजेज भी बता दिया, और सबके घर में ये तो कम से कम भलाई होंगी ना मुझे, है ना बेटा? और ये ना हो जाए तो बंदे की सांस बंद हो जाए। एग्जैक्टली सारा घर दौड़ता है। और एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा जी, वो उसको बाकी नाम कोई चीज़ आए ना आए, वाईफाई को उसको may Allah bless you बेटा। वालेकुम सलाम जी बेटा। आज हमारे टॉपिक जो है मेडिकल सॉल्यूशन, ये मैथ्स का जी जी मेडिकल सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें 3D शेप्स होती है। अब मेडिकल सॉलिड्स की 3 टाइप्स हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जी बेटा। 3D बेसिकली जो हमारी एक कैटेगरी है इस मेडिकल सॉलिड्स की। अब 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। हाँ, ये जो आजकल कहते हैं ना 3D मैप्स हैं, 3D वो मूवीज होती हैं, 3D फिक्शंस होती हैं, एनिमेशंस होती हैं। जी जी अच्छा, ये उसके बारे में क्योंकि हमने ये टॉपिक 3D शेप्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1D और 2D, यानी कि वो बहुत रेयर है, हम लोग यूज़ करते हैं। और बट इसकी एप्लीकेशन वही जो हमने बताई वही होती है। जी लार्ज स्केल में भी होती है। लार्ज स्केल। अब 3 डायमेंशनल इसके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, तो उसके थ्रू आप फिर बैक एंड के ऊपर सारा वो 3D का यही जी। अब 3 डायमेंशनल है यहाँ पे बहुत सारे इसकी टाइप्स मतलब वो शेप्स होती हैं, मगर हम जो मोस्ट कॉमन यूज़ हो रही है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ जाता है सबसे पहले। क्यूब जो इसकी एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आइस क्यूब हो सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। यहाँ पे हम जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है ज़्यादातर जो हमारे घरों में होती है वो है ये रूबिक क्यूब, जो अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं। जी, पजल है ये कुछ। देन आ जाता है पैरामिड की भी आगे टाइप्स हैं, ये 3D की एक अच्छा, पिरामिड भी 3 डायमेंशनल होता है? जी जी। अब इसमें भी आगे टाइप्स है। यहाँ पे हम ट्रायंगुलर पैरामिड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसकी शेप ट्रायंगुलर है। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या फिर हम पेस्ट्री भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने वाटरमेलन लिया। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रिज्म। अभी प्रिज्म क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा वो कहीं कर्व्ड होता है, बिल्कुल वो उसके कोने नहीं होते यहाँ पे, बहुत ये यहाँ पे इस तरह करके कर्व्ड है, बिल्कुल वो मतलब उसको नोक नहीं। इसका प्रिज्म का क्या फ़ायदा होता है बेटा? मतलब ये जो प्रिज्म इसका क्या काम है डेली लाइफ में? जैसे आपने ये एग्जांपल्स दी हमें, ये तो दे दी बच्चों की गेम्स में भी क्यूब्स का, ये दे दिया अपनी पिज़्ज़ा में, और वाटरमेलन का आपने एक सेक्शन बाय सेक्शन किया हुआ है इस तरह का। ये इसकी क्या? अब ये जो प्रिज्म है, ये यहाँ पे एक जो इजिप्ट में एक म्यूजियम है, उसकी शेप भी प्रिज्म है। प्रिज्म है या पिरामिड है? वो तो प्रिज्म है। सर ये बहुत रिलेट करते हैं ना, जैसे अगर हम पैरामिड ये उसी की फैमिली से होते हैं, लेकिन अच्छा। उनकी शेप के थोड़े से डिफरेंस ऑफ डायमेंशन हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे अब पैरामिड जैसे वेज होता है वो भी प्रिज्म Wedge, शेप ही होता है। हाँ। जैसे वो आजकल आते हैं टूल्स डोर को रोकने के लिए, जिसको वेज बीच में जी, देते हैं, wedge, दैट इज wedge। आल्सो प्रिज्म। वो भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है उसकी। पेंसिल्स आती है प्रिज्म शेप की, जो होल्डिंग में हेल्प करती हैं। क्या आती है? जैसे पेंसिल है हाँ। सर, अब सारी पेंसिल्स कुछ हेक्सागोनल भी होती हैं, लेकिन ये प्रिज्म शेप की पेंसिल। इसकी राइटिंग चाहिए आप जितना मर्जी लिख लो, मगर अगर वो होगा कि इसमें जो थोड़ा नुकीला होगा तो फिर आपसे जल्दी हाथ थक जाएंगे या दर्द होने लग जाएगा, मगर होल्डिंग में हेल्प करती है। होल्डिंग में ये ईजी रहता है। उसके बाद ये कोन है। कोन खुद एक ये 3D की एक शेप है। यहाँ पे अब हम कोन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोन खुद एक हम आइसक्रीम के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक खुद एक एग्जांपल है कोन। उसके अलावा जो अब हम पॉपकॉर्न जो होता है जिसमें होता है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, मगर एक कोन की शेप का कोई होता है। वेजिटेबल होती है इस कोन की एग्जांपल? बोले बच्चे यस काइंड ऑफ इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे। कैरेट, रेडिश हाँ, कोन होती है। कैरेट भी होती है ना, कैरेट। रेडिश भी। जी, उसके बाद सिलेंडर। अब सिलेंडर में कुकम्बर भी आ जाता है क्योंकि वो दोनों तरफ से इसकी शेप एक ही जैसी होती है। यहाँ पे हम सेल यूज़ कर रहे हैं, सेल की एक जैसी शेप होती है। उसके अलावा गैस का सिलेंडर होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्पेयर में आ जाती है बॉल्स। ये राउंड मतलब ये राउंड भी है तो अंदर से खाली होता है। जैसे हमारे पास बॉल आ जाती है, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल की बॉल, टेनिस बॉल, ये अंदर से खाली होते हैं।
और ये इस तरह की शेप्स को बोलते हैं स्ट्रेट। इसी फर्दर एग्जांपल्स में वो बॉल्स वगैरह आ जाती हैं जो कि अंदर से खाली होती है और बाकी ये राउंड शेप में होती है। मतलब ये बॉल की एग्जांपल है इसमें? जी जी ये बॉल पहले अर्थ भी स्फेयर जी अर्थ जिसपे हम रुके स्फेरिकल स्फेरिकल भी है जी, उसी में। लेकिन वो अंदर से खाली थी। नहीं वो अंदर से खाली नहीं, इसमें नहीं वो सर्कल थी मगर ओवल शेप एग्जैक्ट शेप जो है अर्थ की सर्कुलर नहीं अंदर ये ठीक हम अंदर बाहर हर तो जगह चलिए, हैं। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए शुक्र है। सारा